Oh my god. Night 2 was such a great show. I really enjoyed it. I am so fascinated about it. And it was so much better than Night 1. Yes, it was better. Night 1, for me, Seth Rollins' cash in was great. Roman Reigns and Jey Uso versus Braun Breaker and Bronson Reed was good. Okay, somehow, Jade Cargill versus Tiffany was also good, but still, we can't night 1 can't surpass a single bit of night 2. It was such a great show and we got something back. I didn't expect it at all कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मिलेगा. मुझे लगा था ब्रॉक लेसनर कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में आएगा ही नहीं अब, बट समहाउ ही इज बैक एंड लेट्स डिस्कस एवरीथिंग. First, start with Io Sky versus Rhea Ripley versus Naomi and ooh, ये तो मुझे पता था कि Io Sky और Rhea Ripley जब भी साथ आएंगे, जब भी आएंगे, बैंगर मैच होगा. It was great to see them again. It was great with Naomi too. Naomi की एंट्रेंस उनके डैड के साथ हुई जो कि मुझे एक इंडिकेशन दे चुका था कि Naomi will retain the championship. But this match was fantastic. हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यो स्काई ये रेसलमेनिया के ट्रिपल थ्रेट से बेटर था. इट वाज नॉट दैट मच बेटर बट इट वाज स्टिल बेटर. इट वाज स्टिल बेटर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मैचेस वुमेन्स रेसलिंग हैव right now in WWE. Io Sky and Rhea Ripley had amazing chemistry. They can put amazing work whenever possible. वी हैड ग्रेट फिनिश. वी देखो इस मैच में बस एक प्रॉब्लम थी कि ये थोड़ा मैच 1-on-1 ज़्यादा लग रहा था एज ए ट्रिपल थ्रेट, क्योंकि बीच बीच में एक सुपरस्टार बाहर चला जाता था और दो लोग आपस में लड़ते थे, जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगता. बट स्टिल इट वॉज अ ग्रेट मैच. वी हैव सीक्वेंसेस लाइक दैट पावर बॉम्ब जो देने वाली थी, शायद सुपरप्लेक्स या पावर बॉम्ब देने वाली थी रिया रिप्ली, बट नियोमी आके इंटरफेयर करती है, उसको मून सॉल्ट देती है. देन यो मून सॉल्ट देती है बट नियोमी हट जाती है. दैट वाज एन अमेजिंग सीक्वेंस एंड नियोमी रिटेन करती है विच इज आई थिंक बेस्ट ऑप्शन बिकॉज नियोमी रेन अभी भी स्टार्ट हुआ है. वी हैव मोर पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर. मे बी समबडी एल्स लाइक आई डोंट नो. दैट्स द थिंग. अभी मुझे पता भी नहीं कि नियोमी का अगला फ्यूड किसके साथ होगा रॉ में, बिकॉज रॉ डज नॉट हैव मैनी ऑफ द बेबी फेसेस. बट इट कुड बी आस्का, इट कुड बी काई सेन, इट कुड बी लायरा मे बी. लेट्स सी, बट इट इज अमेजिंग. Then we have 12 men battling around for SmackDown Tag Team Championship, and they showed the WWE that they deserved a PLE spot, and they fucking ruled it. It was best match of the night. I am saying it was the best match, and it was best match of the night. It may be best match of the entire year, but it was a great match. White Six versus DIY versus Street Profit versus Motor City Machine Gun versus Fraxium versus Andrade and Ray Phoenix. It was a hell of a night. It was so much of roller coaster. I was, jumping off my seat because it has so many things. That four corner, bump. That four corner jump from different superstar to different superstars on table. Candice का गिरना लैडर पे. Oh, I thought she died, man. I thought she died. But it was so much entertaining match. वाइट सिक्स का वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का वो बॉच जो उन्होंने फिर करेक्ट भी किया. दैट्स हाउ यू इम्प्रोवाइज थिंग्स इन रिंग. It was a botch. They knew it was botch, so they corrected it, and it was amazing. And I think the right man won. Maybe इसमें कोई ऐसा right man wrong man था ही नहीं. Everyone deserved it. White Six won. I'm so happy. Now they can try it again with someone else, maybe Motor City Machine Guns, or maybe Fraxium, or maybe Andrade and Ray Phoenix, and we will still love it. Just
keep repeating the same things, and we will love it because it is a great tag team division. There are so many things I can't even know what to talk about in this match. That s- spear position for Tommaso Ciampa, which he botched, which he dodged, and ऐसा लगा था कि अब गिर के मर जाएगा. But there was so many things, and I genuinely don't know what to talk about. Then we have Lyra Valkyria, then we have Lyra Valkyria versus Becky Lynch, which was also a great match. थोड़ा मैच इसमें मुझे यही बस कमी लगी कि वो जो जिप टाई के साथ सेगमेंट था वो बहुत लंबा खींचा, 10 मिनट का शायद सेगमेंट था वो, और उतना ज़रूरत नहीं थी उसकी. जब बल्कि उसके अलावा जितना भी मैच था, आई रियली एंजॉयड इट. इट वाज नाइस, इट वाज अ ग्रेट मैच. बेकी लिंच ने जान निकाल दी लारा वेलकेरिया की, एंड आई वांटेड दैट एग्रेशन इन दिस मैच, एंड इट डिलीवर्ड. बेली आती हैं, बेली के कारण लारा वेलकेरिया मैच हारती हैं. दिस विल नाउ सेट अ फ्यूड बिटवीन लारा वेलकेरिया एंड बेली. बेकी लिंच के बाद अब बहुत ऑप्शंस है, मे बी ईओ स्काई, मे बी रिया रिप्ली फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल. It was an amazing. So far, every match in the night 2 was better than night 1. I am so glad to say that. Then we have Solo Sikoa versus Jacob Fatu. ये वाला मैच थोड़ा मुझे, मतलब मैच अच्छा था. इट वॉज अ नाइस इन रिंग परफॉर्मेंस. सोलो सिकोवा का कैरेक्टर वैसा ही प्ले कर रहा था जैसा उससे अभी तक पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है. एज अ वीक चैम्पियन, मुझे इस तरह का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ चैम्पियन नहीं पसंद. बट स्टिल जेका फाटू था उसके सामने, तो मे बी एनीथिंग कुड बी पॉसिबल. हालांकि स्टील केज का जो मेन मोटिव होता है ताकि बाहर कोई अंदर ना आ सके, और जो मुझे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मोटिव लगता है वो भी बहुत गलत लगता है कि इफ़ यू आर आउट ऑफ केज यू आर वॉट विनर. व्हाट्स द मोटिव ऑफ स्टील केज? यू हैव टू फाइट इनसाइड द स्टील केज. Jacob Fatu versus Sora Sikoa was a disappointment for me. Not so much, but still, it was not as good I expected. Moonsault होता है from the top of the cage, but it was not between the match. It was after the match on Tamatonga and on Tangaloa and JC Mateo. But overall, it was decent match. I'm not saying it was a good match. It was a disappointing for me, but still, let's see what happens with Solo Sikoa now. Then we have Dominic Mysterio versus AJ Styles, and it was an amazing nostalgic ride. Not for me, many of the older people from me, because I started watching WWE from the late 2012. So it was not as nostalgic as for me, but it was still nostalgic because Eddie Guerrero was a legend, and AJ Styles and Dominic gave a tribute to Eddie in this match. First of all, AJ came in a lowrider with Eddie Guerrero's gear, which he wore at SummerSlam when he was fighting with Rey Mysterio for the custody of Dominic, and it was a nice callback. Then we have multiple occasions where they gave tribute to Eddie, like that cheer sequence, like that shoe sequence. It was amazing match. It was entertaining match. I expected AJ Styles to win, but still it was entertaining. Then we have Cody Rhodes versus face John Cena, and we got our John Cena back. We got our baby face back, and it was amazing. For me, this match was great match. They showed us that they didn't ruin WrestleMania 41. Production ruined it. They can put a hell of a match. They can put amazing match despite of being old. I'm sorry, I have to say that John Cena is old, but still he got moves. We got Super Cena back. We got kicks out from everything. We got kick out from Triple AA. We got kick out from Triple Crossroads. We got, when was the time when we see kick out, we finisher was there, it's the finish of the match. But nowadays we got six finishers and still not a winner. But it was amazing. I really enjoyed it. I am so fond of it. And then
Then we gotta pay a tribute to John Cena, but suddenly Brock Lesnar is back, and I don't know how to say this, but I in मैंने मतलब अपने पूरे जीवन के काल में ये कभी नहीं सोचा था कि ब्रॉक लेसनर वापस आएगा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में, बिकॉज ऑफ द लॉ सूट। आई नेवर इमेजिन। और मैं फैंस को इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कमेंट्स में बोलता रहा कि ब्रॉक लेसनर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आई हैव टू फाइंड माई कमेंट्स एंड डिलीट देम बिकॉज ही इज बैक। He gave John Cena F5 and left, and now it's John Cena versus Brock Lesnar at Clash at the Castle, because I'm assuming वही होगा। I'm I'm still shocked from SummerSlam Night 2. I was shocked from Night 1, main event. Then I'm shocked because of this. Let's see what happens in Monday Night Raw and get the hell out of here. And do subscribe to my YouTube channel. Hit the bell icon.